Hello everyone, warm welcome to Testbook JAIIB YouTube channel. My name is Madhav. I welcome you all in the next session. So before we start the discussion, may I have a reply in the comment section that I'm audible, visible, everything is fine, we are good to go so that we can begin the discussion without any further delay. एक बात मैं आपको बता दूं, if you are preparing for JAIIB November 2025 and if you are worried about your PPB, then this is a one-stop solution for everyone. You must join this session on regular basis in order to understand as well as revise many important topics, many important areas which are going to be asked in the examination. So without any further delay, guys, let's begin the discussion. Today we have 15 questions to discuss, but before I start, if you want to download the PDF, then the PDF of this particular session is available on our Telegram channel. The link is on your screen, that is @Testbook Banking Professionals, or even you can scan the QR code to join the channel. ठीक है जी? So without any further ado, let's get started with the first question of the evening. And the first question is now on your screen. The question says demand draft and banker check. We all know that demand draft is basically a type of check which is prepaid. And if it is prepaid, it's quite obvious it cannot be declared as bounce because of insufficient funds. Banker's check is a type of check in which drawer is itself the bank. Not only drawer is also a bank, we call it as a banker check. So the first option we have, DD is payable at any branch of issuing bank across India. अगर हम बात करें एक DD की, तो अगर DD आपने इशू किया तो क्या वो हर एक ब्रांच पे पेएबल होगा? दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू सर. आप किसी भी ब्रांच पे जाकर उस बैंक की इस DD को कैश करवा सकते हैं. दैट इज अलाउड. Then the next point is banker's check is payable only at issuing branch. So banker check is payable only at issuing branch. That is not correct. Jaisa ki I have already told you that bank can get, or the customer can get its check or demand draft cleared at any of the bank's branch. ठीक है जी? Moving on to the next point. अगला point हमारे पास जो है that says banker's check is also called pay order. Banker's check is also called pay order. That is true. DD can be issued for outstation payments only. That is not correct. DD or bank check cannot be stopped once issued. No sir, this is wrong. They can be issued once. They can be stopped once issued. That is wrong. But DD can be issued for outstation payments only. If there would have been a word only, then this statement would have been wrong, but it has been issued for outstation payments. Yes sir, it can be issued for outstation payment. There is no harm in it. So answer is going to be 1, 3 and 4. So this is the correct answer. Moving on to the next one. What does the next answer say? The question says mail transfer or telegraphic transfer. So mail transfer or telegraphic transfer is basically what? Mail transfer is slower than telegraphic transfer. That is true. Telegraphic transfer is faster. It is secure. It is pretty well done in the past, but now it has been replaced by RTGS and NEFT. Telegraphic transfer involves telegraphic instructions between the banks. That is absolutely correct. Both mail transfer and telegraphic transfer are paper-based system. No sir, they are not paper-based system. Telegraphic transfer is considered more secure than mail transfer. That is correct. Both have been largely replaced by NEFT and RTGS. That is correct. So answer is going to be 1, 2, 4, 5. अगर आपको ये पॉइंट नहीं पता, अगर आप पहली बार इन दोनों के बारे में सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन जरूर करें, ताकि अगर ये क्वेश्चन और तरीके से पूछा जाए तो आप इसको आंसर कर पाए. तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इफ समवन आस्क्स मी व्हाट इज मेल ट्रांसफर, व्हाट इज टेलीग्राफिक ट्रांसफर, तो उस क्वेश्चन का जो आंसर मुझे देना है मैं बहुत ही क्लियर कट में दूंगा कि मेल ट्रांसफर इज बेसिकली अ रेमिटेंस सर्विस वेयर मनी इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ लेटर और मेल फ्रॉम वन बैंक ब्रांच टू द अनदर. कस्टमर पे द मनी plus commission at the remitting branch. Remitting branch sends the instruction by post to the drawee branch and drawee branch credit the beneficiary's account or make the payments in cash. Slow है, लेकिन popular था before the electronic transfer, you need to remember. Next we have is telegraphic transfer, a faster remittance service in comparison to mail transfer where the payment instructions are sent through a telegraph or a telephone message. पहले क्या था? Either by letter or by mail. But now we have text message or telegram message or telephone message. Customer deposit funds at remitting branch, similar to the previous one.
Branch sends the payment instruction via telegraphic message to the drawee branch, and drawee branch pays the amount to the beneficiary. So this is the basic meaning of the both. ठीक है जी, clear हो गया. Moving on to the next one. NEFT system. NEFT system, it stands for National Electronic Fund Transfer. So when we talk about when we talk about NEFT, one thing which we need to understand very carefully, that NEFT is 24/7 365 service. That is correct. Earlier it was not, but it has been updated in the past itself. To be very precise, it has been updated in December 2019 itself. Earlier it was settled hourly, that is 12 batches on weekdays and 6 batches on Saturdays, but now it is settled on half yearly batches, and it is a 40-day batches per day. कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी फर्म, कोई भी कॉर्पोरेट जिसके पास बैंक अकाउंट है, बोथ ओरिजिनेटिंग एंड डेस्टिनेशन बैंक्स, दे मस्ट बी एनईएफटी एनेबल्ड, और यहाँ पे अकाउंट टू अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है. 0+ से आप पेमेंट कर सकते हैं. It is based on DNS, that is deferred net settlement for online NEFT through saving bank. It is basically deferred net settlement transactions which are settled in batches, not instantly, which you need to remember. तो यहाँ पे अगर हम देखें, works on DNS, that is correct. Funds are transferred in hourly batches. No, now half hourly batches. No minimum or maximum limit. True. Available 365 days. True. Introduced by RBI in 2005. That is true. But made 24/7 in December 2019. That is also correct. So इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 1, 3, 4, 5 are the correct answers for the given question. अब इसमें सेकंड ऑप्शन क्या सही है? नहीं सर, पहले सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब सेकंड ऑप्शन गलत हो चुका है. सो आंसर इज नॉट गोइंग टू बी 1, 2, इट विल बी 1, 3, 4, 5. सो प्लीज मेक दिस चेंज. इट इज गोइंग टू बी 1, 3, 4, 5. I have intentionally given you the wrong answer over here so that you always remember कि अब जो बैचेस हैं दे आर हाफ आवर्ली बैचेस, विच मीन्स 48 बैचेस इन अ डे. क्या मैं सही हूं यहां पे, या इज इट स्टिल आवर्ली बैच? मे आई हैव एन आंसर प्लीज. एनी डाउट ऑन दिस? सर पहले हाफ आवर्ली था अब आवर्ली हुआ है, या पहले आवर्ली था अब हाफ आवर्ली हुआ है, क्या आंसर है इसका? Okay, so half hourly is the correct answer. Moving on to the next. RTGS, real-time gross settlement, where the settlement is done right away rather than in a deferred form. It's a gross basis real-time settlement. That is true. Minimum transaction is 2 lakhs. That is true. Maximum, again, no limit. Available 24/7. That is true. Used for high-value, time-critical transactions. That is true. So answer to this particular question would be what, sir? अगर मैं इस question के answer की बात करूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1, 2, 4 एंड 5. थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मिनिमम लिमिट 2 लाख है. ये बिल्कुल करेक्ट है. अगला क्वेश्चन देखना, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर. इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर. 1 second guys, I'll just change my image. I think it is blocking your way. Okay, I guess now it's fine. हाँ जी, तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत क्लियर है. क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, what would be the correct answer for this, or what is the meaning first of electronic benefit transfer? तो अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है what is electronic benefit transfer, then I would come up with the answer. इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर एक तरह का मैकेनिज्म है जिसकी मदद से गवर्नमेंट बेनिफिट्स या गवर्नमेंट सब्सिडीज या वेलफेयर पेमेंट्स को ट्रांसफर किया जाता है डायरेक्टली टू द बेनिफिशरीज बैंक अकाउंट थ्रू द बैंक अकाउंट्स और मे बी टू द प्रीपेड कार्ड्स यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है सर. इसकी मदद से क्विक, ट्रांसपेरेंट एंड लीकेज फ्री डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स इज डन. और अगर हम इसके मोड ऑफ ट्रांसफर की बात करें तो यहाँ पे जो मोड ऑफ ट्रांसफर है दैट इज फंड्स आर डायरेक्टली credited into the beneficiary's bank account, which can be accessed through bank branches, business correspondents, ATMs, micro ATMs, mobile banking, Aadhaar enabled payment system and whatnot. If I talk about the benefits, it cover the
social security pensions, it covers the Manrega wages, it covers subsidies, scholarships, even the LPG subsidy, fertilizer subsidy, they all are included. It is based on CBS, that is core banking solution of the banks, and National Payment Corporation of India platforms like Aadhaar enabled payment system as I mentioned. तो उसके हिसाब से अगर हम इसे देखें, used to direct credit of government benefits, that is true, reduces leakage and improve transparency, true, can be linked with the Aadhaar enabled payment system, true, replaces physical cash distribution, true, cannot be used for pension payment, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है, it can be used for pension payments as well. So fifth statement is wrong, rest all the statements are correct. Moving on to the next, mobile banking. बहुत बार we get confused with mobile banking and I would say the online banking. Online banking का मतलब है when you use the internet services in order to enjoy your banking transactions, we call it as online banking. But when you are using the mobile application, mobile data, or you're using the feature phone as well, that comes under the category of mobile banking. So mobile banking uses mobile phone to access banking services such as fund transfer, balance balance inquiry, bill payments. It uses SMS or USSD, unstructured supplementary service data, or even the mobile apps. It is obviously regulated by RBI under the payment and settlement system. It is authorized only to the banks which are licensed by RBI with core banking solutions. They can offer the mobile banking services. उसमें fund transfer है, balance inquiry है, bill payment है, mobile recharge है, चेकबुक सर्विस आप रिक्वेस्ट कर सकते, चेकबुक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं. इट इज जनरली मेजरली बेस्ड ऑन फीचर्ड फोन फॉर एसएमएस और यूएसएसडी एंड इन केस ऑफ स्मार्टफोन विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एप्स. ठीक है जी. तो इस केस में अगर हम देखें, रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ट्रू, रिक्वायर्स टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. बिल्कुल सर, इसमें आपका पासवर्ड रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑथेंटिकेशन. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अगले पॉइंट पे अगर हम बढ़े तो अगला पॉइंट क्या कहता है, यूपीआई इज अ पार्ट ऑफ मोबाइल बैंकिंग सिस्टम. ट्रू, ओनली स्मार्टफोन्स कैन बी यूज. नो सर, फीचर फोन्स भी यूज किए जा सकते हैं. ट्रांजेक्शन कैप्ड एट 2 लाख. सर मोबाइल बैंकिंग की कोई कैपिंग नहीं है. इट इज दी सर्विसेज विच आर यूजिंग. मोबाइल बैंकिंग के जरिए आरटीजीएस कर रहे हो तो 2 लाख से ज्यादा ही कर पाओगे. एनईएफटी कर रहे हो तो कोई भी लिमिट पे कर सकते हो. यूपीआई कर रहे हो तो 2 लाख ही कर पाओगे. सो इट विल डिपेंड. सो आंसर इज गोइंग टू बी 1, 2 एंड 3. रेस्ट ऑल दी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. ठीक है जी. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका डिजिटल पेमेंट. डिजिटल पेमेंट का मतलब है व्हेन द पेमेंट्स आर मेड थ्रू डिजिटल मोड रादर देन फिजिकल मोड. इट इंक्लूड्स यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम एंड कार्ड्स. दैट इज ट्रू. एनपीसीआई इज की इंस्टीट्यूशन इन एनेबलिंग डिजिटल पेमेंट्स. की इंस्टीट्यूशन इन एनेबलिंग डिजिटल पेमेंट्स. ट्रू, डिजिटल पेमेंट्स आर फ्री फॉर कस्टमर्स इन ऑल केसेस. नहीं सर, कार्ड पेमेंट कहाँ फ्री है, चार्जेस लगते हैं सर. कई बार अगर आप आरटीजीएस कर रहे हैं, एनईएफटी कर रहे हैं, वो भी चार्जेबल है, तो वो भी डिजिटल पेमेंट ही. सो इट इज नॉट फ्री. इंटरऑपरेटेबिलिटी इज मैंडेटरी फॉर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज दी वॉलेट्स. आज की डेट में आरबीआई सेड दैट दिस इज ट्रू. भारत क्यूआर और क्यूआर बेस्ड पेमेंट सिस्टम इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट्स. दैट इज ऑल्सो ट्रू. तो आंसर क्या बनेगा सर? इसका आंसर बन जाएगा 1, 2, 4 एंड 5. बट ये हमेशा पेड होगा, ये जरूरी नहीं है. डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज यू आर यूजिंग, उसके बेसिस पे चार्जेस चार्ज किए जाएंगे. Moving on next, safe deposit lockers. Bank provide lockers as ancillary services. Absolutely correct. Ancillary मतलब extra services. Locker facility is regulated by RBI. True. In terms of क्या charges होंगे, कितना rent होगा, RBI सुपरवाइज करता है और कुछ कंडीशंस भी सेट करता है. बैंक लायबल फॉर द लॉस? ना ना ना. अगर कोई नुकसान हो गया तो बैंक को पता ही नहीं ना आपके लॉकर में पड़ा क्या, तो बैंक अपनी पॉकेट से थोड़ा ना पैसा देगा. बैंक इज नॉट लायबल. नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल? यस सर. आज की डेट में तो नॉमिनेशन सर्विसेज को और एक्सटेंड कर दिया. अब जो आपकी सेफ डिपॉजिट या डिपॉजिट अकाउंट्स पे नॉमिनेशन है, पहले वो एक थी, अब आप 4 नॉमिनीज बना सकते हैं, अप टू 4 नॉमिनीज. इसमें भी 2 कंडीशन है, या तो आप सक्सेसिव बना लो या सीक्वेंशियल बना लो. अब अगर मैं सीक्वेंशियल बना रहा हूं तो सीक्वेंशियल के केस में क्या होगा, आई एम फिक्सिंग द सीक्वेंस की मेरे बाद मेरी वाइफ भी नहीं है तो मेरा सन भी नहीं है तो डॉटर. और दूसरा है कि आप उसमें फिक्स कर रहे हैं शेयर, वाइफ को 50%, सन को 15%, डॉटर को 25% एंड सो ऑन. So this is 2 ways which you are allowed. You can choose either one of them. So this is correct.
नेक्स्ट इज ऑपरेशन लिंक टू केवाईसी कंप्लायंस. बिल्कुल सर, आप लॉकर ओपन नहीं कर सकते until and unless you have completed the KYC. That is true. So थर्ड स्टेटमेंट के अलावा बाकी सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगी. 1, 2, 4, 5 आर द करेक्ट आंसर्स. दोज हु आर लाइव गाइस, I would request you, do give me the answers in the reply section so that I can get to know that you are hearing what I am discussing. Everything is loud and clear. You are understanding the points. Your response is very much needed. Moving on to the next. Portfolio management services. When someone else manages my portfolio, this is the service provided under the name of portfolio management services. Portfolio management service is a fee-based service for high net worth individuals. True. Bank requires SEBI approval, registration, licensing for providing the service. True. It includes advisory as well as discretionary services. True. सेम एज म्यूचुअल फंड नहीं सर, म्यूचुअल फंड में तो आप पैसा दे रहे हो ना, म्यूचुअल फंड में तो आपने फंड्स दे दिए, आपके फंड्स को दे विल बी मैनेजिंग एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर द कंडीशंस. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में यू गिव योर पोर्टफोलियो, फिर वो उस पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं. यहाँ पे आपने पोर्टफोलियो नहीं दिया, यू हैव जस्ट गिवन द फंड्स. दैट इज अ डिफरेंस, दैट इज अ डिफरेंस. मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख अगर आप बात करते हैं पीएमएस की, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की जो लिमिट है, दैट मीन्स इफ यू आर आस्किंग समवन टू मैनेज योर पोर्टफोलियो, देन योर पोर्टफोलियो साइज शुड बी ऑफ मिनिमम 50 lakhs. इज दिस करेक्ट? ये 50 lakhs है या 50 लाख है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा सोच समझ के मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में, क्योंकि पहले ये 50 लाख था, आई एग्री, लेकिन उसको शायद कुछ चेंजेस किए हैं अगर आपको याद हो. एनी आइडिया? Any idea? Do reply. If you have no idea, just type N. नहीं, no one. See, portfolio management सर्विसेज की लिमिट की अगर हम बात करें तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं उसके केस में जो लिमिट है, कई बार आपके सामने पॉइंट्स आएंगे कि 10 लाख है या 50 लाख है या फिर 25 लाख है. तो इन सारे पॉइंट्स का आंसर देना मुझे बहुत यहाँ पे ज़रूरी है, इसके बिना you won't be able to answer the questions in the examination. तो उस केस में मेरा आंसर कुछ इस तरह से रन करेगा कि अगर हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की बात करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस आखिरकार है क्या? तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का मतलब है एक पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन which is managed by portfolio professional portfolio managers unlike mutual funds. यहाँ पर जो आपके पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, दे बिल्ड एंड एक्टिवली मैनेजेस अ मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि बेस्ड है आपके रिस्क एपेटाइट पे, इन्वेस्टमेंट होरिजन पे, एज वेल एज आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पे. और अगर मैं कहूँ पीएमएस इज रेगुलेटेड बाय सेबी, दैट इज ट्रू. और द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट हैज इवॉल्व्ड ओवर द टाइम एंड इट नाउ स्टैंड्स फॉर 50 lakhs. अब ये जो स्टैंड करती है वैल्यू वो कितनी है? दैट इज 50 लाख. सो आंसर इज गोइंग टू बी 50 lakhs. दैट इज ट्रू. सो 1, 2, 3, 5 आर करेक्ट. फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग. रिमेंबर दैट. मर्चेंट बैंकिंग. मर्चेंट बैंकिंग अगर आपको याद हो तो रिसेंटली एक न्यूज थी कि गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिनमें गवर्नमेंट का शेयर ज़्यादा है, 25% का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, तो उसके लिए गोल्डमैन सैश को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया टू प्रोवाइड द एडवाइजरी सर्विसेज. सो मर्चेंट बैंकर ऑपरेट्स समहाउ द सेम. तो मर्चेंट बैंकर एज द नेम सजेस्ट, merchant banker as the name suggests, it is a banker of the merchant which tries to help the merchant in all the aspects. So it's a financial intermediary which is registered with SEBI that provides services related to the issue of management security. They act as manager as well as some cases underwriters for the company which is raising the funds in the capital market. Issue management, underwriting, advisory services, portfolio management, loan syndication, private placement of security, corporate counsel and whatnot. These all services are provided by the merchant banker. अब इसके statements देखते हैं.
manage IPOs and capital issues, true. Advisory services for mergers and acquisition, advisory services देगा for merger and acquisition, true. Regulated by SEBI, true. Can also act as portfolio manager, true. Deposit accepting activity, नहीं सर, ये इनका major role नहीं है. So 1, 2, 3, 4 तो correct है, लेकिन fifth statement is not correct. So I'll go with 1, 2, 3, 4. They can accept deposits. I'm not denying it, but that will be a banking services provided to the customer, not the merchant banking services. Government businesses by the bank. So banks, they provide businesses to the government, or they manage the government businesses, and we call them as agent, and their appointment is done by RBI, और उनका agent का जो commission है वो भी RBI सेट करता है, जिसको RBI ने हाल ही में रिवाइज भी किया था, if I'm not wrong, in the month of May और June, जिसमें पेंशन ट्रांजेक्शन पे रिवीजन हुआ, या और फंड रिसीविंग पे जो आपके फंड्स रिसीव करने पे आपको जो कमीशन मिलेगा वो रिवाइज हुआ है एज पर द लेटेस्ट क्राइटेरियाज. दैट इज इंपॉर्टेंट, विच वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर पेड कोर्सेज. यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो बैंक हैंडल्स द टैक्स कलेक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ट्रू. आरबीआई इज बैंकर टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ट्रू. एजेंसी बैंक्स हैंडल गवर्नमेंट बिजनेसेस, ट्रू, एंड दी आर अपॉइंटेड बाय आरबीआई, ट्रू. गवर्नमेंट बिजनेस इंक्लूड पेंशन डिस्बर्समेंट ऑल्सो, ट्रू. ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स automatically handle the government business, nahi sir, they handle the government business only and only once they are appointed as an agent by RBI, otherwise they will not provide this service. So answer is going to be 1, 2, 3, 4. Got it? Next, levying of service charges. Levying of service charges की अगर मैं बात करूं, bank can levy charges only as per RBI approved list. RBI हर charges के लिए list approve नहीं करता. RBI कंडीशन जरूर सेट करता है कि फॉर दीज काइंड ऑफ सर्विस चार्जेस बैंक विल चार्ज दी चार्जेस एज पर देयर बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी. ये तो हो सकता है, लेकिन हमेशा RBI आपको रेट लिस्ट देगा और वो आप सर्विस चार्ज लगाएंगे, दैट इज नॉट करेक्ट. Transparency and prior notice is mandatory while charging these charges, true. Service charges are displayed on the bank website, true. Bank cannot charge on DD and बैंकर चेक इशुएंस, नहीं सर, फिर बैंक कमाएगा कहां से? ये तो बैंक की सर्विस है, जिससे बैंक फंड्स कमाता है, सर्विस चार्जेस कमाता है. कस्टमर इन्फॉर्म्ड 30 days in advance in most of the cases, that is true. So answer will be 2, 3, 5, but I won't go with first and fourth, so answer is going to be 2, 3, 5. That is absolutely correct. Financial inclusion, very broad topic. अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन और व्हाट इज दी, एक बार मुझसे पूछा गया था, मेरी एक इंटरव्यू थी फॉर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन. मैंने भी दुनिया भर के आंसर्स दिए. देन दे आस्क्ड मी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. देन माय आंसर वाज वेरी सिंपल. जहां से मुझे लगता है कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था वो था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट है प्रोवाइडिंग या लिंकिंग पब्लिक with the formal financial sector at affordable cost. ये है concept of financial inclusion. This is something which is important, you need to remember. Firstly, it provides banking services at affordable cost. That is true. There is no harm in this. Business correspondents or business facilitators model used for the last mile. Yes, business correspondent या business facilitators which provide the banking services on the behalf of the bank. In case of correspondent facilitator, they become the middleman to link the customer to the bank. That is true. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is a major initiative. Yes sir. NABARD plays a role. NABARD plays a role, especially in case of rural areas. True. Means only opening. Na sir. Financial inclusion का vision इतना narrow नहीं है. It talks about bank account, credit accounts, insurance services and whatnot. So answer is going to be 1, 2, 3, 4, but the fifth statement is absolutely wrong. So answer is going to be 1, 2, 3, 4. Got it. Next, financial literacy, informing the public about the financial services which are available in the market, as well as informing the public how to utilize these services in an appropriate manner. First is about knowledge and awareness, true. RBI conduct financial literacy weeks, true. Literacy centers run by banks. Literacy centers are run by banks. Yes. Helps customer make informed choices. बिल्कुल सर, अगर आपको information होगी तो आप अच्छी choices करेंगे. Not linked with financial inclusion. No sir, it is one of the major initiative under financial inclusion to inform the public, so that public is not only using these services, they are actually enjoying the actual benefits of these services. So answer is 1, 2, 3, 4. That is absolutely correct.
Last question of the evening, Rural Self-Employment Training Institutes. Rural Self-Employment Training Institute, it provides free training to the rural youth, correct? Aims to skill development and entrepreneurship, correct? Promoted by banks and government of India, correct? NABARD is the part of this initiative? नहीं sir, NABARD is not the part of this initiative. Training includes क्रेडिट लिंकेज, बिल्कुल सर, आपको सिखाता जाता है कि कैसे आप क्रेडिट ले सकते हैं, कैसे क्रेडिट का बेनिफिट होगा, कैसे आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं. ऑल दीज इंफॉर्मेशंस आर गिवन. सो 1 2 3 5 are correct, fourth statement is wrong. So answer is obviously clear to everyone. So that will be all from my side, guys, in this particular session. I hope you must have enjoyed the discussion. Each and every point is crystal clear. If you have enjoyed it, do not forget to like the session before leaving, and do share the link of this session with your friends. Do join our Telegram channel in order to download the PDF. Good luck. Bye-bye. Take care. God bless you all.